रखिए तो कोर्ट का ये बड़ा फैसला, जासूसी कांड की जांच के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनेगी। और सीधे रुक कर लेते हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। Some more money will come to Punjab. So ये साडी efforts हैं which we have proven ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰ ਸਕੇ हैं. So I hope that in the due course this will go on. Now my concern ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ about security measures. Now look, my basic training is that of a soldier. I have been 10 years in the service from my training period to the time I left the army. So I know the basics. On the other hand, 9.5 saal main is Punjab da Home Minister hai, and I've had all the sensitive issues were under me, whether it was intelligence or whatever it was. And somebody who's been Home Minister for 1 month seems to say he knows more than I know, which I've known for 9.5 years, plus my training. I want to show you something. Nobody wants a disturbed Punjab. We must understand we have been through very difficult times in Punjab. ਅਸੀਂ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਗੜਬੜ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 1962 ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫੋਰਸਿਸ ਗਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਈਵਨ ਇਨ 48 ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ ਸੀਆਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 65 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਡ ਦ ਟਰਬਲ ਆਫ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। You have seen Punjab has suffered. I don't want Punjab to suffer. Therefore, it is my duty, was my duty as Chief Minister to see what is happening, and ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੈਂ take up ਕਰਾਂ Government of India ਨਾਲ, that we have to work together to resolve this. Because ਸਾਡਾ 600 kilometers is also my mind. And when people are ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, now when people talk, whether it is all party or anybody, they must be given the proper briefing. I don't know what they were given, whether they were given briefing or not. But I have the figures here of from day one to day now. देखो ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਰ ਦੇ ਨੀਚੇ ਲਈ ਸੁਰੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਹਥਿਊਰ ਜਾਂ ਹੈਰੋਇਨ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ नदियों के ऊपर से बहाकर पाकिस्तान की तरफ से सामान आता था। ये बहुत खतरनाक था। और जो टेक्नोलॉजी है, पहले ड्रोन आए थे आज से तकरीबन 1.5 साल पहले ड्रोन आए थे। It was just hopping across the river. और वो सामान यहाँ पर वापस चले जाते थे। सानू नहीं पता लग गया, हमें कुछ दिनों में पता चल गया कि कहाँ से आ रहे हैं। Then कुदरती तौर पे एक बार एक ड्रोन एक पेड़ के नीचे फंस गया था। So we came to know drones were available, but now पहला था it was dropping across the river. Then they made the distance about 7 to 8 kilometers. And ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ the last lot which I received information, they have gone up to 32 drops were made about 31 kilometers inland. So ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 51 kilometer ਬੜਾ taking over Punjab, this is a total misconception. I do not know what the all party meeting discussed. Lekin please understand one thing. Security forces are there to control the security of the country. Nobody is taking over the government of the state. ਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ। ਉਦੋਂ ਜਦ ਹੋਈ ਸੀ terrorist period, used to have a cordon operation, and the army used to do an outer cordon. Where the police, Punjab police and the CRP and all used to do the inner search and operation. Same is the case now. Nobody is taking over the states. Eta 51 kilometer tak they are on the lookout for these drones. Technology badh rahi hai. These are Chinese drones.
इन्हां दा पेलोड इंक्रीज हो रहा है और इन्हां दी रेंज इंक्रीज हो रही है. Tomorrow you may get them to 50 kilometers, you may get them to 60 kilometers, who knows, they may land near Chandigarh, ki pata lagda sanu. So instead of being critical, it is the duty of every government, responsible government, to see कि ये बिल्कुल जेडे हालात इत्थे बन रहे ने इन्हां दा सामना आपां नूं कैसे करना है and how are we to deal with this. Punjab police is a first class force. They're a trained force. When I was there were 81,000 policemen. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 9,000 ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇੰਪਲੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਹੁਣ 90,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਜਾਣਾ. ਕੁਝ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਲੇਕਿਨ they are not trained for certain things. They are trained for policing. We have commando battalions, we have PAP battalions, they are all doing a good job. But they need help. ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਇਹੀ ਸਾਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਸੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ CRP ਔਰ BSF ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ. ਔਰ ਜਦ CRP BSF ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ army ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ. Army we don't need at the moment because there's no such thing. But certainly assistance to Punjab police, our CRP and our BSF must give it to maintain peace in Punjab. मैं peace ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਸੂਬੇ 'ਚ. मैं नहीं ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੇ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਜਦ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ. ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ. ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕਰਤਾ. Khalistani involved and Pakistani involved. Let me make sure these are sleeper cells of both ISI and Khalistan together. Weapons किथे जा रहे ने, उन्हां दे कोल जा रहे ने. जेड़े असी फड़े ने वो फड़े ने, जेड़े नहीं फड़े वो किथे गए, किहदे कोल गए, क्यों गए, की उन्हां दा ऑब्जेक्टिव है, की what are they planning to do in Punjab. मखौड़ वास्ते तो नहीं आए जेड़े हथियार आए ने. Therefore for any government to say कि जी मखौल हो रहा जी, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा पंजाब दे विच, गैर जिम्मेदारी की गल है, बिल्कुल irresponsible behavior. I have pictures here. Can you help me? Where is the pictures? Just take them out. Just नीचे. Just take these out. Did you hold this? Yes. These are pictures given during mere time. Now here are the drones. Drones ने drop की है. Now how do the drones drop it? They have a GPS system, ground plotting system, which is put into the drone. The drone goes to that GPS location and it drops. And उत्थे somebody जेड़ा इन्हां दा associate है, he picks it up. And वो ले जाके अपने कोल जिथे लुको के रखदा है, वो रखदा है. हुण ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ नहीं फड़दे हो ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ डर है कि कर की रहे हैं इस काम को. This is one drone. This is the pack. फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द. आप देखते रहिए आज तक. पंजाब के पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे आपको वहीं ले चलेंगे. And where you have to require any forces, take them. पंजाब दी हिफाजत साडे हत्थां दे विच है. जो अज असी पॉलिटिक्स दे विच बैठे हैं, सरकार दे विच बैठे हैं, it is our due. And we should not say, I do not say something कि एक गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं करनी. हर पार्टी की ड्यूटी बनती है कि सिक्योरिटी वास्ते कोई पॉलिटिक्स नहीं होती. एक गवर्नमेंट की आपां नूं मदद करनी चाहिए है, जिहड़ी भी है, whether it is Akali Dal or whether it is Aam Aadmi or whether it is myself or whether it's somebody else. We must support the government and in this to maintain peace in Punjab. Now this is what I want to say to you. Now you want to know about the party we are forming. Yes, I am forming a party. Now the question is, what is the name of the party? I can't tell you because I don't know it myself. Our lawyers are today working with the Election Commission, and Jado Election Commission gives us the name, approves the name and approves the symbol, I will come and tell you all. But I can't give you मैं थोनू पहना कोई नाम दे दमा के पार्टी दा और कोई निकल आए कुछ और उठों, that won't be right. So let us wait for the Election Commission to decide. But our lawyers are on the job and we will give you the symbol also. We have made a request for symbol and we have made a request for names also. And when that comes, मैं जरूर तुम दसांगा. Now I'm open to so anything you would like to know. हाँ जी.
तो जो कयास लगाए जा रहे थे कि कैप्टन नई पार्टी बना सकते हैं, ऐलान उन्होंने कर दिया कि वो अब चुनाव में नई पार्टी के साथ उतरेंगे, लेकिन नाम और चिन्ह क्या होगा वो बाद में क्लियर करेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज